सो नवाज, हमने वो वीडियो देखा जिसमें आप बात कर रहे हैं, यू वांटेड टू वर्क विद सुधीर जी 20 years ago. So finally, when you two work together, what was the experience? ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे एक ड्रीम कम ट्रू होता है, वैसा हुआ। क्योंकि हम लोग जब स्कूल से आए थे तो बहुत सारे एक्टर्स के दिमाग में 2-3 ही डायरेक्टर थे, क्योंकि उन डायरेक्टर्स ने हमारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया था, तो हमें लगता था कि अप्रोचेबल होंगे, है ना। तो जैसे गोविंद निहलानी साहब हैं, सुधीर सर हैं, रामू थे, तो ये 3 डायरेक्टर दिमाग में लेके आए थे। और फाइनली जहाँ पे भी शूटिंग होती थी सेट पे सर की, तो पहुँच जाते थे। तो पीछे पड़े हुए थे हम लोग इनके, फाइनली 20 साल बाद पकड़ में आए। Sudhir ji, I was reading a blog by, not blog, but Manu Joseph's, I think उनका website पे it is mentioned that he wanted either Irfan or Nawaz to play the role. So was it a natural choice for you to have cast Nawaz as Ayan Malik? Yeah. I mean, the first when we started working, see, the best way of casting is, when you start writing, a face emerges. I mean, when a face doesn't emerge, then you have to find. So this face and this actor emerged, and we all were unanimous. Luckily, Nawaz said yes. So I mean, there was no problem at all in this area. We thought, we went, and we said yes. So it was brilliant. I mean, when these things happen, a good film happens. When these energies meet, when fortunate accidents happen. नहीं तो वो तो मतलब हर चीज डायरेक्टर के नाम पे थोपी जाती है कि हर चीज डायरेक्टर जैसे अपना कुछ कठपुतली है, कुछ अपना डंडा चला रहा है, सब मैजिक में हो रहा है, ऐसा होता नहीं है। when all sorts of talents meet and when these accidents happen and we get along and our energies collide and coincide, then मजा आता है। तो इसमें हुआ है नवाज के साथ। It's a pretty big role for Nawaz, in the sense Nawaz is almost there in every scene, you can say. How collaborative was the process? For me, it's always I love working with actors, and it's very collaborative. I mean, the advantage with somebody like Nawaz is that he has a skill set, so I mean, you don't have to talk about basics. So you are never talking about इसको इतना emotion कम, इतना वो ज़्यादा, इतना ऊपर करो, इतना नीचे करो, इसको ऐसे बोलो, उसको वैसे बोलो, ऐसे इस तरह से you are talking about idea. What is the idea of it? कहानी में कहाँ ले जा रहे हैं, है ना? वो basically it should serve the purpose of the film. So where does it, how do we work that out? So हम फिल्म के बारे में और कहानी के बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं, और फिर उसका पिच टोन जो भी होगा, किस तरह से आपका ख्याल है। तो कभी आप कुछ बोलोगे एज ए डायरेक्टर, कभी वो कुछ बोलेगा कि सर ऐसा कुछ करके देखो क्या, तो कभी वो वर्क करेगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत ही जिस तरह से मालूम है सुधीर सर के बारे में, हर आदमी जानता है, तो एक लर्निंग प्रोसेस भी था। और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था वही, कि क्योंकि सुधीर सर की जो पिछली फिल्में हैं, तो वो मतलब उनको देख के हम लोग काफ़ी कुछ सीखा उन फिल्मों से हमने। तो जो अप्रोच है, सबसे जो इंटरेस्टिंग मुझे था, जो सर का जो अप्रोच रहता है ना एक्टर के साथ, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको, क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर का थोड़ा सा डर होता है कि रॉन्ग ट्रैक पे ना चला जाए। तो सर का हमेशा वही, अगर सुधीर सर जैसे डायरेक्टर हैं तो आपको कोई मतलब ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो फॉलो करते जाइए, क्योंकि आपको मालूम होता है कि वो बचा लेंगे आपको अगर रॉन्ग ट्रैक पे आप जा रहे हैं। जो बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे थे कि जहाँ पे हो सकता है अगर मैं अपनी मर्जी से करता वो, या मैं अपना चलाता कुछ, तो हो सकता है कि मैं भी शायद कुछ सीन्स में मैं रॉन्ग ट्रैक में चला जाता। बट यही है, सर जो है आके रीज़न और लॉजिक की बात करते हैं, जैसे खुद भी बता रहे हैं कि कंटेंट की बात करते हैं, डिस्कशन होता है। ये नहीं कि भाई लाइंस बता रहे हैं कि इसको इंटोनेशन ये होना चाहिए। एक सीन से पहले जो वो डिस्कशन होता है, आई थिंक हम लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदा करता है सीन में।
ask you, what was the process of adapting the book? Um, since Manu Joseph seems like he had written the book with a screen adaptation in mind, was it easy for you? No, it's not easy. Whenever it's a great book, it's very difficult. The better the book, the more difficult. Because then it works as a book. It works as literature. It's not trying to be a film. Mhm. So then to transfer a great book, which works on words and images and creation and abstracts and another kind of way, to turn it into concrete scenes and with play and actors and scenes and division like that, and it's a difficult thing, very difficult. So it took about with Bhavesh, the writer, it took us about 8 to 10 months to write. We did not write it. We wanted, and we had to invent a lot of things. So there's some things that in order to express the essence of the book, what we liked about the book, we took some things about the book. We did not mimic the book. Yeah. And which is what, and we worked with it, worked in it with Manu's approval. So Manu was always present. Every draft we showed to him. When we went out to Goa to write the final draft of the script, we took Manu along. And Manu really enjoyed the process of making something else rather than redoing the book. फिर उसको वैसे ही वैसे कुछ बनाने की कोशिश करो तो फिर क्या फायदा है उसको? Nawaz, did you identify yourself with Ayan Mani in some ways and his struggles? At some point, yeah, because वो जो एक जिस पोजीशन पे आप होते हैं, स्टेटस जो होता है आपका, आपकी फैमिली का, उससे डेफिनेटली हर पेरेंट्स यही चाहता है कि जो मेरा बेटा है वो कम से कम एटलीस्ट एक जनरेशन लीप ले, एक कूलनेस के लिए। मे बी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, हर आदमी चाहता है कि उनका स्टेटस थोड़ा सा सही हो। तो उस लिहाज से मैं कनेक्ट करता हूँ उसको, क्योंकि हम लोग भी अपने वहाँ पे यही सोचते थे कि यार थोड़ा चीज़ें हो, सम्मान हो, थोड़ा मिले, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ये। बट द थिंग इज़ कि जो अयन का जो कुछ पॉइंट्स पे जो थॉट है वो पर्सनली मेरा नहीं है, मैं उसको बिलोंग नहीं करता हूँ। कि मैं कहीं ना कहीं हार्ड वर्क और ये ऑनेस्टी के साथ चलते रहने में, चाहे भले ही चीज़ें कितने भी सालों के बाद मिले ना मिले, वो मेरा कंसर्न नहीं। बट मुझे लगता है कि मेरी जर्नी होनी चाहिए जो बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत हार्ड वर्किंग के साथ, जो अगर मैं डिज़र्व करता हूँ तो मुझे मिले, ना नहीं तो नहीं मिले। अयन थोड़ा सा इसके बिल्कुल अलग है, तो वो उस लिहाज से मैं कनेक्ट करता हूँ उस चीज़ को। One thing I wanted to know, there was a period when this kind of movies were made by people, filmmakers like you, Shyam Benegal, Govind Nihalani. Do you think somewhere the stories of this kind of people, the everyday man, is less told in Hindi cinema today? For a while, it was less told. We started making films about, for the NRI audience, and we started making films for the samosa homesickness market in the West. And there were, we didn't make films about, because we didn't want to show that image of India or whatever, I don't know, whatever it was. But I think we are coming back, and that's the advantage with Netflix and making films for, because I think it's a lot of, and also a lot of younger filmmakers are coming from smaller towns, and if you notice, for the past 10 years, a lot of writers have come from smaller towns. Mostly they are outsiders. Yeah. Most of the successful ones also. Even if you take the popular ones, many of them are from smaller towns. You take Raju Hirani from Nagpur, right? He's the most successful, right? So, I'm just saying that
suddenly again for the past 5-7 years, you see stories from smaller towns, from other part of India, from villages. Where does the insider-outsider debate that is raging on stand today? You know, tomorrow's yesterday's outsiders, today's insider. That's okay. You know, yesterday Nawaz is the outsider, today is the insider. Then his child, when he becomes a filmmaker, his child also has a right to want to be an actor. No, you can't say Nawaz's child has no right. Right? It's just that there should be fairness. It's just that believe in films, believe in cinema not merely as a dhanda, but something else also. Of telling stories. So if you do it, then it's fine. You know, I don't see, the outsider always has a difficulty. It is more difficult to break into become a big lawyer if you are just an outsider. It is very difficult to become a big doctor and have a great practice if you are outside. But the story is fun, no? That struggle is later you have a story to tell. And if you are good and skilled, let me say that if you are good and skilled, the right people will find you. And those that are nepotists by nature, why do you want to be with them? Why should I want to be with people who are nepotists? Or who don't believe in stories and who believe in dhanda and whatever, and have to come here for the wrong reasons, or want to control me. Why should I want to be with them? I don't want to be invited to the party. I want to be on my own. I'm happy having a cup of tea with Nawaz. No.